ओके, तो आपको थोड़ी देर मेरे साथ में रहना, रुकना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू फोकस अ लिटिल मोर, थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट। ऐसा होता है ना कि एक चीज काम नहीं कर रही, सो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, एंड आई प्रूव एवरीथिंग हियर। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिसको मैं प्रूव नहीं करूंगा। यू ऑल्सो नीड टू पुट ऑल योर माइंड, जितना आपका लॉजिकल एस्पेक्ट है ना, सारा इसमें डालिए, और फिर देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जो डाउट हो आपको पूछे। तो हम क्या करेंगे, I'll tell you a completely different context through which we will look at diabetes. एक बिल्कुल ही अलग तरीके से डायबिटीज को देखें, पहली चीज। फिर क्या करेंगे, then I'll correlate all your symptom with that context. उस context के साथ में जितने सिम्टम होते हैं सबको कोरिलेट करूंगा। इससे प्रूव होगा कि वो कॉन्टेक्स्ट सही है। नाउ फिर मैं इसको और थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर लेके जाऊंगा। I'll tell you why that happens, क्यों ऐसा होता और कैसे होता। उसके बाद I'll tell you little bit about the mechanics of this body, ये शरीर काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी सी चीज बताऊंगा। एंड देन मैं बताऊंगा कि हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, थ्रू कुंभक थेरेपी। ये कुंभक क्या है, विल डू एक्सपेरिमेंट हियर ओनली, यहीं पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। I'll teach you one generic method, एक जेनेरिक मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये सारी चीजें अभी मैं कुछ समय में आपको बताने वाला, सो जस्ट बी विथ मी। पहली चीज, व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? क्या ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाना डायबिटीज है? नॉट नेसेसरी। सो डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज, लॉट ऑफ चैनल्स इन द बॉडी। बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे ब्रेथ गोस इन द लंग, लंग में जाता है ब्रेथ, वहां पे ऑक्सीजन ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है, फिर वो ऑक्सीजन सेल्स के लेवल पे पहुंचते हैं, सेल्स तक पहुंचते हैं, है ना। तो ये एक पाथवे है। ऐसे ही बहुत सारे पाथवे, फूड का पाथवे, खाना खाते हैं तो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है ना, फैट कैसे आपकी बॉडी में जाता है, ये पाथवे, इनको पाथवे कहते हैं, रास्ते। तो एक पाथवे जो बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, रास्ता है, वो है एनर्जी का, ऊर्जा का। हर समय यू नीड एनर्जी, इजंट इट? सो देयर मस्ट बी समथिंग, सम पाथवे थ्रू विच एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। एक पाथवे के जरिए एनर्जी पैदा हो रही है हमारी बॉडी। डायबिटीज का मतलब है वो पाथवे का वीक हो जाना। दोबारा से सुनिए, दोबारा से सुनिए। एनर्जी पाथवे का कमजोर हो जाना इज कॉल्ड एज डायबिटीज। ये पाथवे में क्या क्या आता है, इस रास्ते में क्या क्या होता, थोड़ी सी बात करते हैं। तो यू ईट फूड, आप खाना खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग फॉर्म में शुगर में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। ये शुगर क्या कहें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ इटसेल्फ, आपके मुंह से शुरू हो जाता है। स्टार्च है तो स्टार्च यहीं पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, शुगर या और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज आपके सेल्स में जाते हैं, आपके शरीर में जाते हैं, खून के जरिए पहुंचाए जाते हैं। वहां पे एक चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसी ग्लूकोज को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ह्यूमन बॉडी में, इसे एटीपी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। फिर आपको एनर्जी मिलती है, आपके हर एक सेल में वो एनर्जी मिलती है और काम करने की। तो ये पाथवे है पूरा, ये रास्ता है। इसमें कमजोरी आ गई, कहां पे कमजोरी आई? बहुत जगह पे आ सकती है। इट कैन हैपन कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस रास्ते में, वो कहीं पे आ जाए। इसमें पैनक्रियास एक पार्टिसिपेंट है, पैनक्रियास केवल एक ही पार्टिसिपेंट है इसमें।
इस पाथवे में एक पार्टिसिपेंट पैनक्रियास। तो किसी का पैनक्रियास कमजोर हो सकता है, सम पीपल माइट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, पर इंसुलिन के अलावा भी कुछ और चीज प्रोड्यूस होती है, ग्रेलिन, वो तो आपको बताया नहीं जा रहा है ना। ऐसे ही जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है तो उसको उठाने के लिए सिग्नल आपके पैनक्रियास को जाते हैं। कहां से जाते हैं? लिवर से जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, इतना ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये सब कमजोर हो सकते हैं। लेप्टिन का सिग्नल आपके बॉडी में गड़बड़ हो जाए तो भी ब्लड में शुगर हाई हो जाएगा। लिवर खराब है तो ब्लड में शुगर हाई हो जाएगा, किडनी खराब है तो ब्लड में शुगर हाई हो जाएगा। बॉडी में एक्सचेंज ठीक नहीं हो रहा, अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा, तो ब्लड में शुगर हाई हो जाएगा। कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? बहुत सारे। कुछ तो साइंस ने पता लगा लिया, बहुत सारे अभी पता ही नहीं। तो ये एनर्जी पाथवे में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कहीं पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर जेनेरिक तरीके से इसको डिस्क्राइब करें तो एनर्जी का पाथवे वीक होगा। कच्चा माल क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट, फिर ट्रांसपोर्ट होता है वो, और बाद में एब्जॉर्ब होता है आपके सेल्स में। ये पूरा एक पाथवे है, इसी को पाथवे, रास्ता कहते हैं। अच्छा, इसको कोरिलेट करते हैं, एनर्जी पाथवे वीक होने को सिम्टम के साथ में कोरिलेट करते हैं। लेट्स कोरिलेट विद सिम्टम। सो व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम डायबिटिक पीपल फेस? कौन सी चीज सबसे पहले होती है डायबिटीज के लोगों को? एनर्जी वीकनेस आती है। You feel fatigue, isn't it? See, I am trying to tell in both the languages. Just वो जहां पर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं उसको पकड़िए बस। You feel fatigue, right? Lethargy, fatigue, low energy. Why low energy? ये तो सीधा सीधा there is a correlation. Your energy pathway is weak, therefore you are not getting the required amount of energy. ऊर्जा नहीं मिल रही तो थके हुए लग रहे हैं, फटीग हो रहा है, कमजोरी आ रही है, वीकनेस हो रही है। व्हाट एल्स? जरा ध्यान दीजिए, वीकनेस आ रही है बट यू हैव लॉट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। कमाल की बात है, इजंट इट? जरा ध्यान दीजिए, यू आर फीलिंग वीक बट देयर इज हाई ग्लूकोज इन योर ब्लड। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना? ग्लूकोज हाई है मगर एनर्जी कम है। That means वो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं प्रॉब्लम है। There is some problem in the transportation, the pathway. Even though you have high glucose level, your cells are not really getting it. What is the second thing? Many people might face insomnia. Many people might face insomnia. रात को नींद नहीं आती है ना, रात को नींद नहीं आती। Now just understand, if your blood has high glucose level, the body thinks that you are up for some activity. आप कुछ एक्टिविटी के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये आपको सुलाएगा क्या? Will it make you sleep? No. Because of high glucose level, this body doesn't allow you to sleep properly. It should come down. इसको नीचे आना चाहिए, but it is not happening. क्यों? क्योंकि एनर्जी के पाथवे में वीकनेस है। Whenever you require energy, it is not available. When your energy should be down, it is not getting down. है ना? वो जो पाथवे का बैलेंस में तो गड़बड़ हो गया। What else? What else? Do you know every organ requires energy to perform their function? ये तो मालूम होना चाहिए सभी को। हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। किडनी नीड्स एनर्जी, योर हार्ट नीड्स एनर्जी, है ना? योर नर्वस सिस्टम नीड्स एनर्जी। तो आप क्या क्या फेस होता है? एनीबडी हु हैज डायबिटीज गेट्स ऑन टू सम काइंड ऑफ अ ब्लड प्रेशर इश्यू, और बाद में चल के हार्ट इश्यू में आ जाते हैं। किडनी फंक्शन खराब है, ऑर्गन डैमेज, इसको क्या कह रहे हैं? ऑर्गन डैमेज। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे आपने। बेसिकली ऑर्गन डैमेज हो रहा है आपका, टिश्यू डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही। दे आर नॉट गेटिंग एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शन। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग,
आपको लगता है आप ब्लड शुगर कंट्रोल करके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ऐसा लगता है ना दिमाग में? बट एक भी इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन हु डजंट गेट दीज प्रॉब्लम आफ्टर, इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन. एक इंसान, जस्ट टेल मी वन पर्सन हु डजंट गेट इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम. You are going towards all these problems. You are going towards all these problems, even though you are controlling your blood sugar. So blood sugar control, do you think it's a solution? आपको सोचना पड़ेगा. So let's go a little further. थोड़ा सा और आगे जाते हैं. And other things, कोई भी other things you can relate with energy pathway weakness. इसके साथ में कोई भी symptom आप relate कर सकते हैं. One more thing is frequent urination. Your body temperature doesn't remain in balance, है ना? कुछ लोगों का टेम्परेचर शूट अप कर जाता है, कुछ लोगों का डाउन हो जाता है. फॉर मोस्ट ऑफ यू माइट बी फेसिंग कोल्ड और प्रॉब्लम विथ कोल्ड, कूलर टेम्परेचर. ठंड से प्रॉब्लम हो रही है आपको, ज्यादातर लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए द हीट इज गोइंग अप. फंडामेंटली जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, इट्स गोइंग वीक. नाउ इफ यू रीच अ कोल्ड सीजन, ठंड का मौसम आ रहा है, तो फॉर मेनी पीपल दे गेट इनटू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. बार बार यूरिन पास हो रहा है ना, बार बार यूरिन आ रहा है. क्यों? बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होते ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैपेंस. You know, in Ayurveda, diabetes is known as frequent urination, bahumutra. That means the body temperature is going down frequently. ठीक है? Again, energy pathway gone weak. दोबारा से रिलेट कीजिए. एनर्जी नहीं मिलेगा तो टेम्परेचर कहां से मेंटेन होगा? How will you maintain the body's temperature if you don't get energy? Right? So, और भी any other symptom you can correlate with energy pathway weakness. पर यहां पे हम रुकने नहीं वाले. लेट्स गो अ लिटिल फर्दर. इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. व्हाई दिस वीकनेस इन द एनर्जी पाथवे हैज हैपेंड? ये ऊर्जा का जो तंत्र है उसमें वीकनेस क्यों आ गया? राइट? एक तरीका इसका देखने का मेडिकल साइंस का है. इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैनक्रियास नॉट फंक्शनिंग, लिवर में गड़बड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी ना आपको. एक तरीका वो है. There is another way to look at this. एक दूसरा तरीका देखने का. I'll give you a hint of this. मैं आपको हिंट दूंगा और ये बड़ी स्पेशलाइज चीज है, इसलिए I'll give you one example. उसका हिंट देके बात करेंगे. सपोज कीजिए योर बॉडी, यू ईट सम फूड, आप खाना खाते हैं, इट गोज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्ट होता है, एंड द कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड इन योर बॉडी लाइक एज अ शुगर और एज ग्लूकोज, है ना? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है. बॉडी एब्जॉर्ब्स कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज. एब्जॉर्प्शन, अगर कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो ये ब्लड विल शो हाई शुगर. व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट अपॉन? मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट आर नॉट एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको थोड़ा समझने में थोड़ा फोकस लगेगा. तो देयर इज एन इनटेक कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी. बॉडी का लेने की कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब करने का एक कैपेसिटी है, उसको इनटेक कैपेसिटी है. ठीक है? इनटेक कैपेसिटी इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन एस्पेक्ट, सर्टेन फैक्टर. एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनटेक कैपेसिटी किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राण शक्ति फैक्टर्स बोलते हैं. तो किसी का प्राण शक्ति फैक्टर इनटेक कैपेसिटी वाला कम है, तो उसका एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम होगा. सो दैट पर्सन विल हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको कार्बोहाइड्रेट ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जाके सेल्स में भी एब्जॉर्ब नहीं. जिसका कुछ लोगों का इनटेक कैपेसिटी कम होने से ब्लड में ग्लूकोज हाई होगा. सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जस्ट कीप योर माइंड ओपन, जस्ट कीप योर माइंड ओपन. और मुझे बताइए, एक चीज कमजोर हो गई, एक फैक्टर कमजोर हो गया, इनटेक कैपेसिटी कमजोर हो गया. क्या सॉल्यूशन है? उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है. यू हैव टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ इनटेक कैपेसिटी. यही सॉल्यूशन है. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. देयर कैन नॉट बी एनी अदर सॉल्यूशन. So one of the
participant in the weakening of your energy pathway is intake capacity. Intake capacity कई लोगों का वीक होने की वजह से उनको ग्लूकोज और ब्लड में शुगर हाई है, तो इंटेक कैपेसिटी जैसे ही बढ़ा देंगे शुगर कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। ना इंटेक कैपेसिटी किसमें कम है? ऐसे कितने कैपेसिटीज हैं आपकी बॉडी में? आपके बॉडी में 84 कैपेसिटी, ऐसे 84 फैक्टर्स। आउट ऑफ देम 10 फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। Here we come into picture. यहां पे हमारा रोल बड़ा हो जाता है। We do a diagnosis to find out which factor has gone weak in you individually. इसे कहते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस। What is prana shakti diagnosis? It is a diagnosis which tells us for every individual which factors have gone weak in that particular individual. ये हर एक इंडिविजुअल का अलग होता। Some people might have lack of intake capacity for their high glucose level, और lack of intake capacity की वजह से वो हार्ट इश्यू में जल्दी आते हैं। कुछ लोग किडनी इश्यू में जल्दी आते हैं, डिटॉक्स कैपेसिटी उनकी वीक होती है। तो ये बहुत टेक्निकल है, आई वोंट गो इनटू टू मच डिटेल, मगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक फैक्टर, एक प्राण शक्ति फैक्टर कमजोर हुआ जिससे डायबिटीज आई, एनर्जी पाथवे वीक हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, यही सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं? व्हाट डू? वी फाइंड आउट दैट फैक्टर इन ईच इंडिविजुअल। सो हूएवर जॉइन्स द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करता है उनको क्या दिया जाता है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म, राइट। सो वो फॉर्म फिल करते हैं तो हमें पता चल जाता है विच फैक्टर इज वीक इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। फिर उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ में हम जाते हैं, राइट। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको? नाउ आई एम स्लोली कमिंग टू आवर मोटो और कुंभक थेरेपीज। इस बीच में लेट्स अंडरस्टैंड दिस बॉडी अ लिटिल, थोड़ा सा समझेंगे ना, फिर आपको पता कोरिलेट, यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग। सो गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं and I get very interesting answers. So which scientist designed this human body? इस ह्यूमन बॉडी को कौन से साइंटिस्ट ने डिजाइन किया, ये बताइए मुझे। आपको मालूम है, देयर आर सम आंसर्स व्हिच कम एज वी हैव नॉट रेड इट येट, अभी तक पढ़ा नहीं है हमने। देन आई से माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग बट योर आंसर इज मोर रॉन्ग। So which scientist designed this human body? So somebody says God. Now God तो एक ऐसी चीज है जिसपे कहते हैं ना, आपका कुछ भी डाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ नॉन एंटिटी। अगर आपके घर में कोई हो तो थप्पड़ भी मार दो आप, बट गॉड इज somebody which is नॉन एंटिटी, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोई भी नहीं जानते तो उस पर डाल दो, किस्मत खराब है उस पर डाल दो, अच्छी चीज वही उस पर डाल दो। So let's not talk about God. Let's talk about something which we can prove now. अभी प्रूव करेंगे, we will prove it now. Who designed human body? So I'll tell you, मैं आपको बताता हूं। In this program, one African comes, एक अफ्रीकन आता है, and his camera is on, and you can see the African. तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि are you African? You will say he is African, है ना? इंडिया में नॉर्थ ईस्ट part of the country, if somebody comes, you will immediately recognize, oh, you are from Northeast, you are South Indian, you are Punjabi. आप देख के ही पता लगा लेते हैं। So who designed his body? अफ्रीकन का बॉडी किसने डिजाइन किया? अफ्रीका ने डिजाइन किया। The geography designed the human body. The place where your ancestors resided, inhabited, उस जगह ने डिजाइन किया। इन जनरल नेचर डिजाइंड योर बॉडी, इजंट इट? नेचर ने डिजाइन किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डिजाइन। इसका डिजाइन भी समझते हैं ना, तभी इस्तेमाल करेंगे, इजंट इट? इफ यू हैव अ डीजल कार, आपके पास एक डीजल गाड़ी है, तो आप पेट्रोल डाल के या केरोसिन डाल के विल यू बी एबल टू रन द व्हीकल? विल यू बी एबल टू रन द व्हीकल यूजिंग केरोसिन और पेट्रोल? एक डीजल गाड़ी को
चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आप अपने घर में एलपीजी को किसी और चीज से चला सकते हैं क्या? केरोसिन और सम अदर? नहीं चला सकते। सो कॉमन sense na, common sense, let's use common sense more, let's use our education less, common sense more, right? So let's see the design of this body. Let's see the design of this body. This body is designed for two things, दो चीजों के लिए डिजाइन। whatever grows in nature, प्रकृति में जो पैदा होती है चीजें, फल सब्जियां, this is the food of this body. The second part, this body is designed for natural triggers. ट्रिगर क्या होता है? टेम्परेचर, क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, द नेचुरल फ्लोरा एंड फाना अराउंड दिस बॉडी। प्राकृतिक जो भी चीजें हैं वो इस शरीर को एक तरीके से उकसाव देती हैं, ट्रिगर देती है। इससे ये बॉडी अच्छा या खराब होता। सो टू थिंग्स, नेचुरल फूड एंड नेचुरल ट्रिगर्स, इसके लिए डिजाइंड है बॉडी। Tell me one thing, is this body designed for medicine? Very important question. आप अपने आप से पूछिए, just use your common sense. Is this body designed for medicine? नहीं. But you still think we can come out of diabetes using medicine, or we can come to health by using medicine. आप सोचते हैं ना? If this body is not designed for medicine, do you think using medicine is not right for this body? So 70% of the times, medicine cannot treat any ailment. Chronic ailment तो medicine ठीक कर ही नहीं सकता। जहां डॉक्टर आपको कहता है जिंदगी भर करना पड़ेगा, that means medicine cannot cure. केवल एंटीबायोटिक 30% टाइम एंटीबायोटिक कैन क्योर समथिंग, बट एंटीबायोटिक फंक्शन डिफरेंटली, उसको हम साइड में रख देते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। मेडिसिन, नाउ इफ दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर मेडिसिन, यू ऑल टेक मेटफॉर्मिन, यू पॉप इन अ मेटफॉर्मिन पिल 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज व्हाटएवर, आप एक मेटफॉर्मिन खाते हैं, मुंह में खा लिया। व्हाट दिस बॉडी थिंक, ये शरीर क्या सोचता है? पॉइजन आ गया, सम पॉइजन हैज कम इनटू दिस बॉडी, है ना। सो हु इज द गेट कीपर ऑफ दिस बॉडी? लिवर। So liver throws out that poison, उसको निकाल देता है बाहर। So 10 milligram आपके बॉडी में घुसाना है, somehow it has to be pushed in your body, 10 milligram. Then dosage आपको क्या दिया जाता है? 500 milligram. Why? Because 490 milligram body throws out, क्योंकि this is not food. This is like poison for this body. So 10 milligram still bypasses the liver. इसको liver bypass कहते हैं। फार्मास्यूटिकल टर्म्स में लिवर बाईपास कहते हैं। ऑल मेडिसिन गो थ्रू लिवर बाईपास टू एंटर योर बॉडी। यहां धोखा दिया पहली जगह आपने, फर्स्ट प्लेस यू हैव ट्रिक्ड योर बॉडी। देन हाउ डज मेडिसिन वर्क? बाय रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। एक ही मैकेनिज्म है किसी भी मेडिसिन का, फॉर एनी मेडिसिन देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। So body is not absorbing, your cells is not absorbing glucose, नहीं कर रहा, तो ये सेल्स के वॉल पे चिपक जाएगा, रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देगा और धोखा दे देगा सेल को शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए। To absorb sugar, this will trick the cell. So second place where you have tricked your body. दोनों जगह धोखा दिया ना आपने, धोखा देके मेडिसिन काम करते हैं। How long you want to trick your body? आप मुझे बताइए, how long आप शरीर को धोखा देना चाहते हैं और कितना समय लेगा? That is why it gets into problem. Organ damage, neuropathy, retinopathy, so many different problems. And with lot of responsibility, I'm telling you one thing, understand this very clearly. Because of the use of medicine, one of the largest contributor, medicine is one of the largest contributor. Because of the frequent use of medicine, human genome is getting destabilized. इसका मतलब क्या हुआ? जीन्स होता है ना एक इंडिविजुअल का, there is genes. For whole of humanity at this point of time, the gene footprint is known as genome. तो जीन्स कमजोर हो रहे हैं ह्यूमंस के,
कैसे पता चलेगा? I told you everything. I'll prove it now, here and now. Do you know lot of children are becoming diabetic? आपको पता चल रहा है? 2-3 साल के, 4 साल, 5 साल के बच्चे, they are taking insulin shots. We are not able to integrate this body properly. तभी तो ये हो रहा है. Diabetic age earlier was 50-60 years. अब क्या है? Even 30s, 20s, teens. है ना? Children are getting into diabetes. Human genome is getting destabilized. 2-3 जनरेशन के बाद में, आफ्टर 3-4 जनरेशन, 2-3 तो अभी कह लीजिए आ ही रहा है, बट 3-4 जनरेशन विल नॉट बी एबल टू बेयर हेल्दी बेबीज. हम हेल्दी बेबी पैदा ही नहीं कर पाएंगे. आर वी मूविंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन? We are, because of what we are doing. So human genome getting destabilized. आप जरा इसको देखिए. So let's talk about how to correct it. Let's come to कुंभक therapy. So I told you external trigger होता है ना. खाना भी अभी we are into altered food ना. सारा hybrid खाना है. Fruits, vegetables, everything is like hybrid, not natural. Some genetic transformation or change has been done. और उसके बाद भी we do processed food. We eat so much processed food. Altered food हो गया ना वो, that becomes altered food. So it will help. तो थोड़ा सा help करता है if you change your food, but it will not strengthen your energy pathway. खाना आप कम खाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, तो you will have less glucose in your blood. But that doesn't mean कि आपका वो strength मिल गया आपके energy pathway को. वो तो still weak है. So external factors are triggers. Can you change the external factor? The way we have corrupted the environment, the way we have corrupted the air, or change the quality of water, change the quality of food, change the temperature of earth. क्या इसको आप ठीक कर सकते हैं? You can't do anything about it. है ना? Even if we start today, it will take 100 years, 150 years to correct it to some extent. है ना? So what can we do? What can we do? हम कर क्या सकते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, in this worst situation, still there are people who don't get into diabetes. They must have something within themselves. They must have very strong energy pathway. कि वो weak नहीं हो पाया. So can we strengthen the energy pathway? या can we strengthen the factors which control the energy pathway? ये ज्यादा सही, technically सही है. Can we strengthen the factors which controls the energy pathway? Yes. So let's understand strength creating mechanism of this human body. Strength creating mechanism of this human body. So physical strength, how do you create physical strength? Let's do experiment. अब शुरू होते हैं experiment करना. एक एक करके I'll tell, we'll do a lot of experiments so that you can understand clearly. है ना? अपना keep your left hand like this, make a fist from the right hand, दाएं हाथ से मुट्ठी बांधिए और जोर से प्रेस कीजिए, जोर लगाइए, पूरा स्ट्रेंथ क्रिएट कीजिए. That creates a lot of strength. How are you creating this strength? ये strength आप कैसे create कर रहे हैं? Many people will say using muscles, है ना, bones, nerves, ये सारे, mind also. But still we are missing one point. What is that point? दोबारा से करते हैं. Let's do it again. The amount of strength you create is proportional to breath hold. सांस जितना रोकेंगे ना उतना ही strength create कर सकते हैं. Let's do it again. देखिए पीछे देखिए. The amount of strength we create is proportional to breath hold. Breath hold जितना होगा उतना strength create कर पाए. देखिए ज्यादा जोर लगाइए. What do? You hold your breath. है ना? Isn't it? Do it to find out. करें. So when you lift a weight, आप heavy weight उठाते हैं? कैसे उठाते हैं? How do you lift a weight? By holding your breath. How do you push somebody? किसी को धक्का देते हैं, दीवार है साथ में, धक्का देके देखें. Just push the wall. How do you push the wall or create the strength of push? By holding your breath. किसी को खींच के देखिए. Just pull somebody. If you have played tug of war, रस्सा कस्सी का भी खेलिए,
How do you pull someone? How do you pull someone? By holding your breath. Jump लगाते हैं. How do you jump? By holding your breath. You go to gym, lift weight. Weight तो trigger है केवल. Fundamentally, you are holding your breath. Weight is a trigger to hold your breath more. Right? Weight से ज्यादा breath hold करना पड़ता है. That's how you create more strength. You do any kind of yoga, jogging, brisk walking. There is a variable amount of breath hold going on behind. Without breath hold, आप कोई effort नहीं create कर सकते. Morning you get up and what do? अंगड़ाई लेते हैं. You are feeling tired, so you freshen yourself up. How do you do that? You hold your breath and tense your body. अंगड़ाई कैसे लेते हैं? You hold your breath and tense your body. Even if you have to get up from the chair and you have problem of knees, थोड़ी सी आवाज आती है ना, what did you do? You held your breath. Without holding your breath, you cannot make any effort and you cannot create any physical strength. ठीक है, एक बात समझ में आ गई. Next step. How do you create mental focus or mental strength? कैसे create करते हैं? If you have any fine dot around you, कोई बहुत महीन dot है ना, fine dot, just try to focus on that dot. Or if you have a wall clock, अगर दीवार घड़ी लगी ना, तो सेकंड के टिप पे जो सेकंड की सुई है ना, the second hand, tip of second hand, उस पर जरा फोकस करके देखिए. If you do any kind of fine work, fine art or fine weaving, कुछ भी बहुत महीन काम कर रहे हैं, चावल चुन रहे हैं, चावल में से कंकड़ पत्थर निकाल रहे हैं, how do you do that? You hold your breath to create focus. Even if you are reading a book and you get too much involved in that, थोड़ी देर बाद लंबी सांस आती है, आपको पता भी नहीं चलता. You don't even notice that you have held your breath in creating focus. है ना? So mental strength कैसे पैदा होती है? By holding your breath. You have only one mechanism of creating strength. Physical strength के लिए breath hold, mental strength breath hold. Let's come to the point now. There are a lot of functions happening in your body. बहुत सारे काम हो रहे हैं ना. Heart function, liver function, kidney function, neuro function, lung function, catabolism, anabolism, metabolism, hormone function. आप बताते जाइए, बहुत सारे function, lot of functions happening in the body, right? One function gone weak, एक function weak हो गया. Let's talk about metabolism. आपने ये word सुना होगा. What is diabetes? It is also known as metabolic syndrome, है ना? Metabolism gone weak. अब metabolism या pancreas gone weak, उसका function weak हो. How do you create strength in both these things? कैसे create करेंगे? By giving an internal trigger. Can you rejuvenate pancreas? Yes. Why not? Why? How? Pancreas have stem cells. हर एक organ में stem cells होता. If you give proper trigger to stem cells, वो organ rejuvenate होने लग जाता. It may take different amount of time for different people, but it happens. It has to happen. So how can you give the internal trigger? कैसे internal trigger देंगे? आपके पास तो एक ही trigger है. You have only one trigger. What is that trigger? Breath hold. So by holding your breath in a particular way, एक तरीके से for a particular time, एक समय तक अगर आप करेंगे तो it will give trigger to your liver. So liver rejuvenate होना शुरू हो जाए. A different breath hold mechanism can give a trigger to your pancreas. So pancreas rejuvenate होगा. Kidneys can rejuvenate. Nervous system can rejuvenate. But this, you need to know how to create that trigger and give your body that trigger. There we come in picture. वहीं पे हम काम के लिए आते हैं. This is what we have worked upon.
राइट? सो वी डू अ प्राण शक्ति डायग्नोसिस, कौन सा फैक्टर वीक आ गया, एंड देन वी डिजाइन अ ब्रेथ होल्ड मेथड टू गिव इंटरनल ट्रिगर टू दैट वीक एस्पेक्ट। वो स्ट्रेंथन करने के काम हम कुंभक थेरेपी। व्हाट इज कुंभक थेरेपी? ब्रेथ होल्ड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेथ होल्ड। देयर कैन बी लैक्स ऑफ कुंभक मेथड्स, लाखों कुंभक मेथड है, which I am reviving in the world, because after 20-25 years kumbhak has to become mainline treatment for chronic ailments. There is no other way. अगर आपको अपने जीन्स को इंटीग्रेट करना है आज भी, there is no other way but kumbhak. So kumbhak is the only way which can work at the very fundamentals of this mechanism of the body. तो एक कुंभक आपको मैं अभी करवा रहा हूं, बिकॉज देयर इज, सी व्हाट वी डू इन अ क्लास इज वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड, बिकॉज वी डू प्राण शक्ति डायग्नोसिस एंड देन फाइन ट्यून द मेथड। वो एक तरीके का ऑपरेशन है, तो आपको ऑपरेशन सीखना है तो आपको ऑपरेशन कराना होगा। आप ये नहीं कह सकते ना कि हार्ट का ऑपरेशन मुझे कराना, पर एक बार टेस्ट तो दे दो, किडनी का ऑपरेशन कर दो पहले। यू कांट डू दैट, नहीं? सो इट इज absolutely insensitive to say such things. So what we teach in a class is like an operation. It is customized for every individual. लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक मेथड बता रहा हूं। जेनेरिक मेथड एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड जेनेरिक मेथड, बट टू गिव यू अ हिंट, आई एम गिविंग यू वन मेथड। किसी को कमर में दर्द है, एनीबडी हैज लोअर बैक पेन और डिस्क प्रोलैप्स अगर किसी को है, इफ द पर्सन इज हैविंग द पेन नाउ, अभी ठीक होगा, अभी वो उसमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना? अभी उसमें रिलीफ मिल जाएगा, थोड़े टाइम में ही रिलीफ मिल जाएगा। यू कैन वॉक एंड सी। सर दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज लोअर बैक पेन मे हैपन बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं फिर भी एक जेनेरिक मेथड दे रहा हूं आपको, है ना? जेनेरिक मेथड सिखा रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं हम, इसमें करेंगे क्या। आपको हाथ को ना ऐसे रखना है, ऐसे मेक अ फिस्ट, ओपन योर थम्स एंड कीप इट डाउनवर्ड्स ऑन द नीज। घुटने पर रखिए इसको, ऐसे करके घुटने पर रखिए, ठीक है ना? घुटने पर रखिए। कीप योर बॉडी अ लिटिल स्ट्रेट, थोड़ा सा सीधा रखिए। आपको 3 झटके में सांस लेना, 3 झटके में सांस लेना, 3 झटके में सांस लेना। होल्ड, रोक लें, रोक लें, और अपने कमर को टाइट करें, कमर को टाइट करें। पुश द होल ब्रेथ टुवर्ड्स द हिप रीजन, हिप रीजन को पूरा टाइट करें। रोक के रखेंगे, हिप रीजन को पूरा टाइट करेंगे। वी आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर एट द हिप रीजन। हिप रीजन को टाइट रखिए, टाइट रखिए, टाइट रखिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। फॉर वट एवर टाइम पीरियड यू कैन होल्ड, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। एंड इफ यू कांट होल्ड फर्दर, आप रोक नहीं सकते, तो धीरे धीरे एक्सेल करते हैं। एक्सेल स्लोली। एक राउंड किया अभी हमने, ठीक है? एक राउंड किया, एक ट्रिगर दिया हमने, एक राउंड का ट्रिगर दिया। आइडियली यू शुड गिव 21 टाइम्स ट्रिगर टू दैट हिप रीजन, फिर आप एकदम से पेन खत्म हो जाएगा। बट वी विल नॉट डू 21 टाइम्स, राइट? हम थोड़ा सा करेंगे। यू कैन डू ऑन योर ओन। अच्छा, सेकेंड टाइम, लेट्स डू इट। सेकेंड टाइम, इनहेल फास्ट इन 3 steps, full fill yourself with air and then tense the hip region। हिप को टाइट करें, पेट को, हिप रीजन को बिल्कुल टाइट करें, टाइट करके रखें। होल्ड इट एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल फॉर यू। जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। जब नहीं रोक पाए तो धीरे धीरे करके यू एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, आराम से एक्सेल कर। एक और टाइम, एक विल डू वन मोर राउंड, one more round. So inhale fast 3 times, fill yourself with air, hold, रोक लें, and now tense the hip region। tense कीजिए, hip region को tense कीजिए, पूरा tense कीजिए, जितना tense कर सकते हैं कीजिए, जितना टाइट कर सकते हैं कमर को उतना टाइट कीजिए। रोक के रखिए जितना रोक सकते हैं। And exhale slowly।
अभी भी if you get up and walk a little, you'll see the difference. If you give it to person जिसका slip disc है ना, वो उठ नहीं पाता, वो उठने लग जाएगा. The person will be able to get up and walk. What I'm saying is, this is not the exact solution for your problem, because it may happen because due to various reasons. But you can see the difference in the pain. Abhi bhi if you walk, you'll see your walk will be different. So this is not the right way to actually deliver Kumbhak. So that is why I have given you one simple generic method. Ideally, I should have given you with a proper diagnosis. फिर आपका कमर का भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा. So this is what we do. ये हम करते हैं. We find out the core reason of your weakness in the energy pathway. We design a Kumbhak module, breath hold in a very specialized way. A module addressing to that specific reason. Individual का customized module हम deliver करते हैं. Right? अगर आप नहीं समझ पाए, अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए, we can organize a short session of 1 hour, a paid session जिसमें और भी elaborate करके I can explain this. But देखिए, if you come in the diabetes program, then only your diabetes will go. So I'll stop here. Over to Navneet ji. Okay, thank you, Rajiv. So many questions have come. Tell how to control diabetes through Kumbhak, how many minutes Kumbhak one has to do, is this one-time consultation for a long time? So let's talk about the solution over here or the course, okay? So before I do that, अभी हमने Kumbhak का एक छोटा सा नमूना देखा और you know, kind of a sample you got of it. So it is wrong to call it a sample because it is not some kind of product or medicine or, you know, eatable that we are offering over here. So is it difficult to come out of diabetes? No. Is it easy to come out of diabetes? No. क्या डायबिटीज से बाहर आना मुश्किल है? नहीं. क्या डायबिटीज से बाहर आना आसान है? नहीं. क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने देखा, उसके लिए एक आपको पर्टिकुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा वो हम आपको सिखाते हैं. कैसे सिखाते हैं हम आपको इसमें उसके बारे में मैं जरा डिटेल कोर्स के बारे में बताता हूं. सो आई विल टेक बिट ऑफ मोर ऑफ योर टाइम एंड टेल यू अबाउट हाउ यू कैन जॉइन द कोर्स and come out of it. Okay. Okay, so some people must be wondering whether does it work or not. Yes, it does work for many people. Here are a few examples. Victor Bischoff, 65 years old, 65 साल के, from France, has been out of diabetes for 4 months. Demendra Botre, who had a problem of diabetes plus BP plus heart issues, is out of medicine. Okay. Nitesh Naik, again diabetes plus BP. Okay, इनका HB1AC reduced from 7.2 to 5.5 within 2 weeks. Nirmala Sridhar, another case. Similarly, आपको ये शायद रिकॉर्डिंग में देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा. सुमित संधू के पहले के रिकॉर्ड लेवल्स थे 264, 230, 227, 177. Later on, this was in the month of January till March. By May 24th, it was down to 102, 131, 118. By which? By what? By Kumbhak itself. Punita Mehta from Mumbai, during the lockdown time, had no access to medicine. वो medicine ले ही नहीं पाए. All she had was Kumbhak, and you know, from 205 and 356, her levels came down to 108, 94, 107 post food. Okay, Pravesh Ghai, इनको राइट फुट और राइट आर्म में डायबिटिक और पैरालिटिक अटैक के कारण सेंसेशन नहीं है. नो सेंसेशन he had, but within 2 months he gained sensations in the right side of his body, and initially for 3-4 hours, then for 12 for 14 hours. Now therefore, and what else? A lot of other participants report
weight loss in inches or body weight. Morning hunger pangs are gone, sleep patterns improved, waking up without an effort, high energy throughout the day. Okay. So here is the program. The program objective is to help you come out of medicine and diabetes completely. With what? Customized Kumbhak module supported by integrated lifestyle transformation. Okay. तो किसी ने पूछा how long you have to do it? You learn it as a 30-minute module. आप इसको 30 मिनट का मॉड्यूल सीखेंगे. How many times, how much time you have to do? You did it 20 minutes. You have to do it 20 minutes in the day, in the morning, and 10 minutes in the evening. This is taught in 3 classes of 1.5 hours each over 3 weeks, which means if the first class starts this Sunday, then the next class will be on the next Sunday, and the next class after that will be on next Sunday. So it is not an everyday class, only 1 class per week. Okay. There is no diet involved in this. There is no exercise involved in it, only Kumbhak. The aim is for permanent cure, and you can do this Kumbhak anywhere, anytime. In the sense, you can do it on a bed, you can do it on a chair, on the floor, etc. And in addition to Kumbhak, what else will you get in this course? You will get a unique diet perspective, mental and emotional training, because वो बहुत ज़रूरी है. At home detox processes, access to all class videos and material. कि जो भी आप classes attend करेंगे, तो आपको इसका class video material दोनों मिलेगा. And of course, timely answers to all your questions. What is duration? The engagement is for 3 months. It will start with 3 regular classes over 3 weeks, which will also include your customization session. After customization session also, we'll have 2-3 follow-up sessions. In your course, the course will also, when you start, we'll have Prana Shakti diagnosis, which tells us why you are getting into the diabetic condition and what else, whatever else is happening in your body. The Prana Shakti diagnosis helps us do this. This is an online form. It is not any sample collecting. It does not involve any kind of sample collecting. Why do we need Prana Shakti diagnosis? Because every system is different. So therefore, everyone needs to have a different solution for themselves. All right. This is how, just like we have a webinar today, the classes are conducted online. Okay. This is at a fixed day and time. And these 2 classes, first 2 classes, are to help prepare your system for customization. In the customization, we explain what is the diagnosis, what is your system problem, and what are the modules and how to do it. And we answer all question and answers. Okay. And we also have follow-up sessions, which include tracking of blood sugar levels, phasing out of medicine. Okay. Usually in consultation with your doctor, not our doctor, your doctor. And throughout, you will get support through question and answer sessions all the time. These are some feedbacks from the participants who are already in the program, that within the first month, in the first month itself. I'll explain this, no problem. Okay, please carry on. So basically, this is a snapshot of people who have participated and basis their feedback. तो लोगों ने अलग अलग चीजों के ऊपर अपना रिस्पांस दिया है. इमोशनली वो कैसा फील कर रहे थे, ओवरऑल हेल्थ. सो कपल ऑफ थिंग्स आई लाइक टू हाईलाइट हियर. पहले 1 महीने में जो लोगों का रिएक्शन था, 75% ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट देयर ओवरऑल हेल्थ हैज इंप्रूव्ड. शुगर रीडिंग्स 50%, आधे से ज्यादा लोगों की 51% है ये. 51% ऑफ द पीपल देयर शुगर रीडिंग्स हैव इंप्रूव्ड. मेडिसिन हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर 7% ऑफ द पीपल. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं है कि आपने लिया और करना शुरू किया और 4 दिन में या 10 दिन में तुरंत काया पलट हो गई. वो नहीं होने वाली है सर आपकी. It takes a little bit of time because we are trying to affect something which is permanent. But within this short span also, there has been reduction in medicine for a certain number of people. Now, we have also taken a snapshot of people post the first month during within the phase of the program itself. So अगले 2 महीने में, in the next 2 to 3 months, this is what people react with. और अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन तकरीबन या तो खत्म हो चुकी है या काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है फॉर 53% ऑफ पीपल, 54% ऑफ द पीपल एक्चुअली. Sugar readings additionally has reduced. People have not removed their medication and all of that. वो कम नहीं हुई है काफी सारे लोगों की, लेकिन फिर भी जिनकी नहीं कम हुई है उसमें से करीबन 32% लोगों की शुगर रीडिंग्स में भी काफी इंप्रूवमेंट है. अब इन दोनों चीजों को अगर आप सम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, which is like nearly around 90 to 94% of the people, they are having a huge reduction in their sugar readings.
or medicine has eliminated, or medicine has substantially reduced, and there are marked improvement in multiple other health markers. Now about the program cost. So if somebody is interested in a trial class, किसी को लगे कि हम देखना चाहते हैं, feel करना चाहते हैं, तो there would be a separate trial class arranged for you. That would be of 600 rupees. But typically, overall, the program cost for all of the things that we are going to do, individually assisting each and every single one of you and providing you a custom, unique solution which you will keep for your entire life. वो सारी चीजों के लिए we are charging for this entire 3-month course. We are charging only 7,000 rupees as a program cost. वो 7,000 रुपए में, just because you have made the effort to come into this webinar, there is an additional discount of 1,000 rupees. तो आपको 6,000 रुपए का ये डिस्काउंट मिलेगा, 6,000 रुपए का डिस्काउंटेड अमाउंट पे मिलेगा for anyone who is a webinar attendee. Now, if you are totally convinced, you have any questions, get them answered. अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं यही कहूंगा कि आप तुरंत ज्वाइन करिए. इस दिन के लिए अगले दोपहर तक के लिए कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं एक्सेट्रा, तो दोपहर 12 बजे तक के लिए, कल तक के लिए, इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट, आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट है 600 रुपए का, विच इज 5,400 रुपीज. इसको आप वेबसाइट पे जाके यू कैन प्रॉब्ली, इज इट नॉट विजिबल टू पीपल? For those people who are saying website is the price is high, let me assure you the feedback that we have received from people who have participated. अगर आप फीस हाई बोल रहे हो तो आप फीस हाई केवल एक कारण की वजह से बोल रहे हो कि आप इसको योगा समझ रहे हो और आपको लगता है कि योगा फ्री मिलता है. आप इसको एक दवाई, एक मेडिकेशन, एक थेरेपी की तरह से नहीं देख रहे हो. अगर आप इसको इलाज की तरह से देखोगे तो आपको लगेगा जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग इसकी फीस तकरीबन 15,000 के अराउंड कोट करना शुरू करें, विच वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स. तो अभी ये जो आपको प्राइस मिल रहा है, ये प्राइस डेफिनेटली लोएस्ट है. इसके बाद में प्राइस लगातार हमने इंक्रीज करना, उस डायरेक्शन में जाना होगा, बिकॉज ऑफ द एफर्ट द एंटायर टीम पुट्स इन. एक एक इंसान की लगातार प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना. द ओनली टाइम नवनीत जी एंड राजीव जी, देयर टीम इज साइलेंट is between 11 PM in the night to 7 AM in the morning. उसके अलावा लगातार लोगों के सवाल जवाब आते हैं. So many things they answer upon. कैसे क्रियाएं करनी है, कैसे खाने पीने से रिलेटेड गाइडेंस, इमोशनल मेंटल इश्यूज से रिलेटेड गाइडेंस, लगातार डिस्कशंस होते रहते हैं. These are not just these sessions that is getting promised. There are so many more things that you get inside this particular program. So many different sessions we keep conducting, जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्टिसिपेंट टू अ पेड प्रोग्राम. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बहुत पॉजिटिव रिव्यूज भी आते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है. हाँ, अगर आप पेमेंट के बारे में स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो पेमेंट के कई सारे मोड्स हैं. जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके सामने एक, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. अपनी स्क्रीन हट गई है शायद. तो आप लोगों को अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के कई सारे तरीके हैं. आप लोग, आपकी स्क्रीन पे QR कोड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये QR कोड्स को अभी आप स्क्रीन पे चाहो तो स्कैन कर सकते हो. दिस इज एप्लीकेबल फॉर गूगल पे, पेटीएम, दोनों में. ये मेरा नंबर है 9717 जो कंपनी अकाउंट से कनेक्टेड है, 9717333655. इस नंबर पे यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू गूगल पे और पेटीएम, अगर आप वॉलेट के थ्रू करना चाहते हो. इफ यू वांट टू मेक अ अकाउंट ट्रांसफर थ्रू बैंक, अगेन दिस QR कोड इज देयर. और बैंकिंग डिटेल्स ये हैं. ये आपको प्रेजेंटेशन, ये छोटा सा एक PDF है, ये PDF आपके साथ में शेयर किया जाएगा अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग. वो सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी. अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है तो ये एक लिंक है, पेमेंट लिंक चैट में शेयर किया जा रहा है. You can use a payment link and through that payment link you can make a credit card or a debit card payment. Now if you go ahead and do this immediately, you get to save a little bit of money. Money important नहीं है, मेरे ख्याल से money कहीं important नहीं है. आपका convince होना बहुत ज्यादा important है, क्योंकि जितने भी लोगों ने participate किया है, मेरे ख्याल से 500, 600, 1000 रुपए अगर health के ऊपर और डायबिटीज से छुटकारा लेने के ऊपर अगर आपको अगर कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, तो उस ऑप्शन के लिए मेरे ख्याल से 500, 600, 1000, 2000, 5000 रुपए, इवन इफ यू कैलकुलेट
the amount of money that you put in to your doctors, whosoever that doctor is, nothing against any kind of diabetologist or any kind of a doctor, those tests, those doctors' fees, the kind of medicine that you take and that you have to take for your entirety of life, plus the organ failures, plus the amputations, plus the many kind of surgeries which you may not have to take in future. तो सारी चीजों को cost लिख के, I mean, is there a point of discussion about money? तो वो मेरे ख्याल से important नहीं है. Important ये है कि आप जो आपको पर्सनल हेल्थ इश्यूज हैं उनको समझिए, क्या कुंभक आपके लिए सही है कि नहीं है वो चीज आप समझिए, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो समझिए, और उनके सवालों का जवाब लेके सेटिस्फाई होके प्लीज गो अहेड एंड गेट रिड ऑफ दिस यूजलेस डिजीज. करने का जरूरत ही क्या है जब इससे छुटकारा पाना पॉसिबल है तो. आई थिंक इसके बाद स्क्रीन थोड़ी देर के आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, but we'll start taking up questions. I would encourage each and every single one to post in their questions, and we'll start picking up questions. Sir, the course, by the way, the course, very valid question. Sorry, Gauri ji. The course is going to start on a Tuesday. All Tuesdays, 7 a.m. in the morning, we'll be having these sessions. तो 7 बजे सुबह के समय में the sessions are going to be there. आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग सारे सेशंस की अवेलेबल रहती हैं, बट वी हाईली रिकमेंड एंड वी वांट टू पुट अ डिसिप्लिन इन जिसमें हर बंदा उस सेशन में अवेलेबल हर हाल में हो, तभी वो अच्छे से गेन कर पाएगा. अगर वो सेशन के बाहर रहेगा और रिकॉर्डिंग की बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से हर चीज हमारे हाथ में नहीं है सर एंड मैम. आप लोगों को सेशन में आना पड़ेगा और आना चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ के. So, okay, so just can you stop the screen, please? Yeah, I think we can take the questions. Yeah, one major question that is coming across is there any guarantee? Is there any guarantee? Yes, there is 100% guarantee that you can come out of this. Now, this guarantee involves not just us, it involves you. So before you come into the course, before you question any further about anything, मेरा सवाल आपसे ये है, are you willing to work upon yourself for half an hour a day, half an hour to 40 minutes in a day? Are you willing to work upon yourself? If you are willing to work upon yourself, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आप मुझे बताइए. अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? Yes, मेथड हम आपको बताएंगे. Okay, so there is as far as guarantee is concerned, that is there. How soon will I start seeing benefits after starting the practice of your therapy? Ma'am, some people start getting benefits in 2 days. Some people get it in 2 weeks. Some people get it in a month or so. It is not fixed because every system is different. हमें नहीं पता आपके system में कितना weakness है. Okay. Hello, can I, after doing this course, can I give treatment to others? No, please don't. Please don't. This involves customization. And therefore, you will not be qualified to give this treatment to others. Okay. Would we be interested in payback? Yes, if you send me a video every day, morning, evening, that whatever you're doing is up to what we have told you. You send me a video every day, morning, evening for the next 3 months, we will pay you back. This is answer to Sanjay Kamble. Yeah. If you want, you can. खाने पीने में भी बदलाव करना होगा. नहीं, हमने बोला है कि कोई हम डाइट प्लान नहीं देते हैं. हम चाहेंगे जो आपके घर पे मिलता है, whatever is available to you easily, then you should eat that. If it is customized, yes, first 2 sessions are general. By third session we do customization. Okay, once you come to the class, you will know how it is done. A couple of things I wanted to add. So those who are interested in a trial class, please type in trial with your phone number and we'll reach out to you. और इसके अलावा anybody and everybody who is interested in this program, please share your numbers. I'm also sharing a small little poll for you. अगर आप लोगों को ये ठीक लगा है हमारी बातें या जैसी भी लगी हो, आप प्लीज उस पर रिस्पॉन्स करिएगा. और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम उन्हें रीच आउट करें और स्पेसिफिक उनके सवाल जवाब हैं, कुछ भी हैं, प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स इन
and we'll try and reach out to you. Everyone, please share your number. सारे सवालों के जवाब हम लोग आपके देंगे, और किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कंसर्न है, कंडक्ट कैसे होता है, मैं कैसे करूंगा, कोई भी चीज कैसे होगी, वो सारी चीजों के लिए प्लीज शेयर योर नंबर्स. ड्रॉप इन एवरी नंबर, जो भी कंसर्न हो, एंड द टीम वुड रीच आउट टू यू. बट आप अगर हमें जवाब नहीं देंगे, आप हमें कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो हम भी आपको कांटेक्ट कर नहीं पाएंगे. सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू. Can this cure Parkinson's? People with Parkinson get a lot of help. There are specialized things that we do for people suffering from Parkinson, and they can have a lot of benefits and relief. Actually, almost like it's almost like coming out of it completely. But that is done separately, so you can talk with us separately. Also, people asked कि अगर हम कुंभक करते हैं, क्या blood pressure उससे खराब होगा? So I'm just extending it further. Can people with heart condition do it? Can people who have got angioplasty or other surgery on their heart or other organs do it? Yes, they can do it. They'll obviously have to tell us as to when did they go through that surgery, and the classes will take care of that. Can I take alcohol during this period? Sir, please. You come to the class, we'll tell you whether you can take alcohol, you can distribute alcohol, or whatever you wish to do it. This course is primarily for diabetes and its related conditions. So let's say you are diabetic, you have blood pressure also. If your primary condition is diabetic, plus you have, let's say you have some kind of weight issue, you have insomnia, you have some kind of, joint pains, etc. So all these are taken care of in customization. Okay. When we customize the program according to your system. Yeah. This is, and people are also asking, is there any other time available? No, currently this is the only time available, Tuesday 7 a.m. If you wish to join other batches, because we take one batch at a time. And can it cure mental stress? Yes, I think I've answered that. So right now, this is the only time available for everyone. Now, if you wish to ask any specific question, you can ask. If you have hypothyroidism, we would, if your primary condition is hypothyroidism, then it is better that you join our thyroid reversal program. Okay. How many people in a batch? We can take many people in a batch, 100 people, 200 people. That is not an issue. Yeah. Sir, you talked about doing some form to understand like what kind of kumbhak I am required to do. Yeah. What do you do exactly? What do? We do Prana Shakti How do you diagnosis. diagnose that this is the major problem in my body, because of which is the root cause for my diabetic? Yeah. So we do a Prana Shakti diagnosis, which is a diagnosis about your system. It is not based on what is there in your blood or whatever other instruments show. It is based on who you are and what your system is like. So we have our set of questions that help us get to that. Navneet, please unmute yourself. Yeah. Is it similar to Isha Kriya by Sadhguru? No. If it was, we would have said it is similar to either, whether it is a Kriya by Sadhguru or Sri Ravi Shankarji. We will not take something from somewhere and call it our own. We have that much of integrity and decency. No, this is our very own system. Rajiv has revived Kumbhak, and he is the one who's also come up with Prana Shakti diagnosis.
Sir, Where where does can I get more information about the therapy which you are providing before I join the class? what kind of information are you looking for, sir? I mean, there must be something available on YouTube or something like, basically, what is your qualification, or maybe No, in Kumbh. we are Kumbhak yogis. We have started Right. Kumbhak yoga or Kumbhak. So we did not. No, no, I I'll ask understand that, Rajiv to sir, but answer this. Yeah. what I Okay, haven't. just a minute. I'll answer that. Now, if you have worked upon certain aspect of life or whatever, and you have come with an invention, completely Mhm. new thing, then who do you want to get certified from? Because nobody knows in the world about that. You only know. So you should be certifying everybody else now. Nobody else can certify you. So are we certified by somebody? Nobody is qualified to certify me. I'm Okay. saying if you learn this, I will certify you that you are doing it correctly. This is the same with you also. If you know some aspect or you know some art, now somebody learn from you, you can certify that person. So in that sense, nobody can certify. We will start a Kumbhak University, in fact, where we will certify people. The second thing is, if you want to go for a angioplasty, do you really want to learn angioplasty? It will take a lot of time. I'm saying it will take a lot of time for you to learn that. It has taken me a lot of time to actually understand the whole thing, the whole concept. So not many years, probably more lifetime. So somebody who says without learning angioplasty, I'll not get myself, or I'll not lie on a surgery table. That is not how it works. If you want to learn, you can contact us. We will give you a lot of information apart from the course. But if you want to come out of diabetes, you need to go for this course. आपको Okay. करना पड़ेगा. आप नहीं, अगर if you still have some doubts, they will send you some more information. Or you can come into the trial class where we'll tell a little more elaborately about the thing. Yes. That would be great. You can join the trial class. Hello, can I ask a question? Sure. Sir, since you say that you are the architect of this program, or rather inventor of this program, this is related to the question which the person has asked earlier. What guarantee are... So can we speak to some of your earlier participants? Can you share their numbers to understand the efficacy and usefulness of this program before we commit ourselves? One thing is, you can always talk to the participant, provided they want to talk to you. So this is a program where we are also obliged to keep the participants' detail, not open the detail. But if you want, we can talk to a few people. If they are willing, they can talk to you. You can give your number. If they are willing, they can talk to you. They will talk to you. You can you can talk to them, but it is not guaranteed. It depends on their view, Willingness. their I understand. their agreement. Somebody in the question up, when I scroll up the chat, there is a question. Somebody asked me, I do not know why, that am I diabetic? Navneet Kapoor over here. Okay. So, and I do not know whether this works for the gentleman who asked this question earlier or not. I was diabetic. Okay. And like many of you, I tried everything, and I had a very, very active lifestyle. Okay. And I tried even yoga, meditation, etc. I got relief, no doubt about it. But once, somewhere last year, my sugar level fasting crossed 300, and post prandial crossed 500. Okay, and I went to a doctor. He gave me medicine. Obviously, he was supposed to give me medicine, and I took medicine, and I kind of crashed the next day. And I said, no, I'm not going to go to medicine anymore. Okay, I knew Rajiv because we had been working together, and he gave me my Kumbhak. And within 1 week, I'm on
Camera, I'm on public platform, therefore I'm being very careful about what I say over here. Okay. Within 1 week, my sugar level came down to normal. Now, this is me. This happened for me. Okay. Will it happen for everyone? Not necessarily. Okay. And I continued further, and it's been almost a year and a half. I have not touched medicine. Okay. Number two, besides this, I had arthritic pain. I had other issues. Okay. With Kumbhak, I came out of this. So I was literally saying the first beneficiary of this organized way in which we are reaching out to people. And that is one of the reasons why people like me have joined hands with Rajiv to take it to more and more people. Okay. I do not know, sir, whether it works for you, because I'm from the company. So if you doubt my credentials in saying that, I'll understand that. But I'm just being open about it on a public platform. Okay. So, sir, this is Parinita. So, we have heard about so many multiple options of people giving guarantee that you do diets and you do these things. This is the first time I have heard or I have come across on a social media platform, and hence I thought that I really wanted to know how really this works. As soon as you have a trial class, I think most of us, I don't know if I'm taking the liberty to talk on, behalf of everybody. If you have a trial class, it'll really give us an idea of yes or no. Because frankly, I'm quite as young as 34. I got sugar, got to know sugar about a month back, and it was largely because of steroid induced. But it is scary, right? At 34 when you get it, and it's a little scary. Ma'am, can I ask you a question? Yeah. Where does diabetes happen? कहाँ से आती है? Where does it come from? That's the question. I mean, I have been. No. Just look at it. I mean, it is not that some fly bit you or some mosquito bit you. Yeah, correct. No? Correct. Agree. It is happening inside, right? Yeah. So whatever is happening inside, that means I have some kind of control over it, some kind of, not full. Correct. Okay. So if I know there is something wrong inside, and if I know a method to address it, don't you think it will work? For example, I mean, just to give you a very, very crude example. Let's say I am overweight. Okay. Yeah. I go to a gym and the instructor tells me, you do this, you do this, you do this. And I do that. Don't you think I will lose weight? Obviously not in 1 week. But if I work upon myself, don't you think results will come? Yeah. Agree. I mean, the commitment, you will teach us the commitment has to be from a person. No. We will only teach you the practice. Commitment has to be yours, which is why we said we guarantee. But there is another part to it, which is you. Okay. Yeah. If you're willing to work upon yourself, there is guaranteed. It is guaranteed. Yes, what we are again repeatedly saying, that time period will vary from person to person. Yeah. I mean, that's really general. You can't say that, everybody will get out of it in 30 days or 10 days. No. I agree to it. I think a trial class should really help because I think a lot of people are quite new to this technique. Yeah. So there is a trial class option. It will be a paid option. Okay. Because in which we will teach you practices, but they will not be diabetes practices, because we will not, they are highly specialized practices. They are based on customization, etc. Okay. But it will give you a great idea about how Kumbhak can be such a powerful way to build your internal strength, both physical as well as mental. Okay. If you get a taste of it, I'm sure you will want to come to the main class. Right. Certainly. Excuse me, sir. Yes, one request, ma'am. Yeah, I'm a diabetic. Can you please type in trial and your number, whosoever wants to go for a trial class, so that we can reach out to you? I think most of them have done that. You want us to do it on WhatsApp? We can do it there as well. Here itself is fine. I wanted to make sure that you have done that. That's all. Hello. Hello. Yes, ma'am. Please go ahead. Yeah, I'm a juvenile diabetic, and I have cardiac. My age is 57. Okay. Please go ahead. I got diabetic at the age of 7. So now, will it help me?
so chronic it is. See, if you have seen the whole webinar, we have been Yes. talking about the weak factor within you. Either it has happened at the age of 7 or 37 or 47 or whatever age. So Okay. there must be something which has gone weak. We are strengthening Ah. that. So whatever age you do that, you will get relief. You will get out of the problem. It doesn't matter how long you have been suffering from diabetes. The only thing is you need to work upon those factors, and the time period will vary for each individual depending upon the kind of problem or the kind of weakness the system has, the kind of complication the system has. Okay, okay. There is a difference of time period, otherwise everyone will get help. Okay. The doctors told that the pancreas has totally stopped working. So there is no production of insulin. Yeah, pancreas may have stopped. That depends on the kind of diagnosis you have done. May have stopped, but as I said, it can again get rejuvenated by creating an internal trigger. There are many aspects to this also. If your sugar level is not very high, if you just increase the absorption factor in your body, you'll have less sugar. You think you will come out of diabetes, but that we have strengthened one factor. So of course the results will be there. Even if the pancreas has completely stopped, we can rejuvenate it back. Okay, okay. And I'm also taking 4 times insulin. So it will get reduced. It will get reduced as you do the practices. Okay, okay. Thank you. Sir, as a follow-up to that lady's question, hello, am I audible? Yes, yes. As a follow-up to what that lady has asked you, in fact, I got diabetes when I was 30. I am 58 now. At that time, the number one diabetologist in Asia, Dr. M. Vishwanathan in Chennai, has told me that diabetes is like early aging of or early graying of hair. In some people, it goes gray early. Some people keep their hair black for long period. So you cannot reverse it. You have to live with it. So you can possibly only moderately control it, but you cannot bring it back to its pristine form. So that means it is early graying of, early aging of pancreas. That is what is diabetes. That's what he said. And he is a highly respected diabetologist and highly celebrated and, great physician. So that is the point I am trying to again ask whether it is possible to reverse the functioning of old. Yeah. I got your question. Yeah. Now, the children of very less age, like 4 years, 5 years, they are getting early gray hair. More and more are getting early gray hair. What it suggests is, are we really looking? Whosoever the diabetologist is, I'm not disputing the medical science. They have one way of looking at diabetes. They have one context. Whosoever the person is, they have one context. They are looking at diabetes just through one context. I told you another context. Can there be other context also? I'm asking you, can there be different context of looking at the same problem? Can there be? Yeah. Can I also come in? I'm a doctor. I would also like to put in my 2 bits. Yeah, there can be different context of looking at one problem. Yeah. So I am not disputing the medical science. They have one context of looking at the problem. Through their context, whatever they have researched, through their context, it is not possible. But from a different context that I have talked, it is still possible. Do you think it is early graying hair, the kind of analogy that you are saying, for a 4-year-old kid, can it be early graying hair? Yeah, it was doctor's analogy, not mine. Yeah. So, Mother, you are understanding it. That's why I'm asking you. Oh, correct. So, for children, can it be early graying hair? No, there's something has gone weak.
Something has gone weak. We have to. Sir, can I strengthen it. come in? It's a different concept. Yeah, please come in, madam. Hello. Yeah, I'm Dr. Surena Malhotra. I'm a pathologist, MBBS and DPB. Further, I would like to, I mean, after hearing all this, I mean, I would like to, in fact, quite agree with your method of treatment. Basically, in the sense that this is a way of improving the oxygenation and basically the oxygen reaching to the cellular level and, of course, generating more ATP. And whatever was discussed, I found it quite scientific, quite nice, and I don't think there's any harm in trying this, you know. Yeah. There is So no harm. this There is no my side effect personal to it. opinion ki, yeah, there is no side effect, and in fact it is the explanation which was given and all, it's quite scientific, you know. It stands to reason. It is like you're basically trying to improve your cellular metabolism and increasing the production of ATP, and then whatever the by you know pushing in more oxygen, holding breath techniques and all that. So if you're going to teach all such techniques, they should improve the organs in quite a good way. This is my personal opinion. But I think then in that case, a trial classes you know would be helpful for people to get confidence. Even I would myself like to try a trial class, and I'm quite open about the whole thing. You can go for the trial class, and this is beautiful that you are open. In fact, everybody, doctor should be more open than anybody else. Yeah, as long as it stands to reason, as long as the explanation Yes. is given is quite scientific, then yeah, why not? I mean, we are always learning something new, you know, as long as it's scientific, and whatever was discussed, it sounded quite fair. It's like, you know, giving the oxygen right to the cellular level and then trying to increase the efficiency. As you said, mitochondrial, you know, producing more ATP and things like that. So that But would definitely be helpful. But how can it be directed to a particular organ like a liver, pancreas, heart, or something else? So That is see, what is that in is question. that is their Yeah. techniques which we have to see. Now there are a lot of things like even when we do exercises, we try to focus it to the lungs. We try to improve the what do you call, you know, the your capacity by doing some exercises by which we breathe more. So they may be having some way of directing it more to a particular organ. I'll give you a little hint. So I can't give a complete class here. Correct. To learn to open up the Kumbhak and the various aspects of the mechanics of life, because it is too complex. But still, I'll give you one simple thing to understand. How can Kumbhak give trigger? How can Kumbhak can give trigger to different aspects? Can you mute people? people? There might be people who have their right hand very strong. Yeah. And they use their right hand more. There might be some people who use left hand more. How did you do that? It was not from the birth, but you did it. You created strength in one hand more and not in the other hand. How did you do that? You used one hand more. And in creating any effort, you have to hold your breath. Absolutely. You have to true. hold your breath to a certain extent. Yeah, correct. Now, we are talking about breath hold. Breath hold, and if you just tense your right hand, you will be able to create more power in your right hand. If you hold your breath and tense your right hand, you will be able to create more power. That's how you have done it. But you don't recognize it. You have already done that. Now, internal trigger, creating an internal trigger. Your breath is in mode lock with all the functioning of your body. Right or wrong, just go and do research. Yes. Your breath is in mode lock. Now, I'm telling you all these things. You must do a little exploration of these things. Your breath is in mode lock with all the functioning of your body. Correct. Whatever function happens, the breath is in mode lock with that function. So by holding it for a certain period of time, we impact one functioning or the organ related to that function. Reverse process. I'm telling you, reverse tracing it. One function increases, your breath increases, or the breath changes completely. If your heart becomes weak, your breath changes completely, because your breath is
in mode lock with the heart functioning. Similarly with the kidney functioning, liver functioning. Now, if you create certain strength in the functioning of your or the breath in your functioning of the breath or the factor which is making the breath happen, you can actually impact that particular organ. So in a very simplistic way, I'm trying to explain how it creates an impact on that organ. So in a particular way, if you hold your breath for a particular time period, it impacts liver. Another way, it impacts kidney. Another way, it impacts the whole metabolic process. So this is the fundamentals. But when you call factors which is responsible for one functioning, there is no context in medical science as such at this point of time. The context is there in different sciences which existed long time, but we have not explored those sciences too much in the current century, or in the current 400,000 years or so. Correct. What I'm trying to do is revive those aspects. It is not that they are not scientific. Science is fundamentally reasoning and measurement. Reasoning and measurement. For the subtle aspects of life, we can do that also. Because the West didn't have this context, it doesn't mean the context doesn't exist. It exists. Only thing is we have to put reason and measurement behind that. That I'll be doing and will be doing for the Kumbhak therapy also. So anything which impacts your breath or the strength of your breath impacts your functioning or internal functioning also. It is just that breath is in mode lock with your internal functioning. Using breath, we are creating a particular trigger inside your system, and that's how we are rejuvenating an organ or reviving a pathway. And So as it is, I mean, if you do sort of hold the breath and all, your overall, all the organs are also going to improve. Your overall internal status quo is going to improve. Yes, so yes, as it is, it's like going to be beneficial either way. It is like a circle. All the functions are placed in a circle. Whichever you pick up, the whole circle will get impacted. Yes, that's true. The only thing is we are picking up a problem that is currently existing in you. Correct. Can kidney function be revived in a person if he's on a dialysis for 8 years? One sec. Will it help people with cancer? Yeah. These are the two questions. Would you like to answer that, Rajiv? And of course, will we also experience weight loss with this therapy? Yes, you will if you are overweight. Yeah. Weight loss will definitely happen. Ma'am, we would like to address other questions also. Thank you so much for your contribution. Yeah. Cancer and kidney. Yeah. Kidney issues can be revived. Cancer can be reversed very fast. We use special Kumbhak as well as supporting that Kumbhak with an external Rasa Yoga or a combination of certain Ras, which can reverse your cancer. It depends on the cancer also, but it can, in most cases, we have found result in 21 days flat. When is the evening session? KS Ganesh ji, evening session abhi currently nahi hai. It is not on right now. You please stay in touch with Ayush and you know, we'll let you know when when you can join the evening program. Okay. Dattarya Kodolikar is saying, I had one friend who got mentally imbalanced practicing Kumbhak, unfortunately, and unfortunately he committed suicide. Are there any known risks that any one of your trainees experienced in the past? The person practicing Kumbhak, actually Kumbhak in yoga, in the yoga lineage, you know what is yoga? We are not talking about yoga here. We are talking about therapy. Yoga fundamentally means reaching to a state of union or oneness. So yoga also uses Kumbhak. Now I'll tell you, yoga also uses Kumbhak. Yoga also uses Swara Yoga or the Swara aspect of life. Yoga also uses sound or the mantra yoga. Yoga also uses different aspects of human mechanism.
So in yoga also Kumbhak is used, but mostly in yoga it is discarded or it is not promoted. Why? Because Kumbhak is like holding your functional system. Yoga is like killing yourself. Yoga is like killing yourself. If you kill your personality, then you will reach to a state of union or oneness with the existence. For that, you don't need to hold your body and hold your personality. Kumbhak is like integrating your functions, integrating yourself. So in yoga, it is discarded or mostly discouraged. In yoga, mostly Kumbhak is discouraged. Yoga lineages talk about Kumbhak, but very in a very subtle manner. What the person was doing, I don't know. But through Kumbhak, nobody can die. Nobody can die. If you are in a deathbed through Kumbhak, you can revive yourself. You can revive yourself. He must have died because of the psychological issue, not by Kumbhak. He might be practicing Kumbhak also. Now you put the blame on Kumbhak is your perception, but it cannot. It cannot. So there must be some very different thing, and the kind of things that he might be doing, we don't know. Kind of Kumbhak, because mostly if you learn Kumbhak, it will be through some yoga lineage. It is not therapy. If you do therapy, you can come out of the problem. Mental issue. We also have had patients who were able to drop their medicine for depression, okay, while doing diabetes module, because customization took care of that. Yeah. Yes, sir. Please go ahead. Somebody was asking a question. Hello. Just Hello. people हाँ जी बोलिए. who are interested, please drop in their numbers. आप अपने numbers दे दीजिए ताकि we can reach out. Else, other people who want a trial and their number. हेलो. बोलिए मैम, प्लीज गो अहेड. आपकी आवाज आ रही है. हाँ, तो मैं शिखा बोस बोल रही हूँ. हेलो हिमांशु बोस. मैम एक मिनट जरा, मैं ये और लोगों को म्यूट करें. हाँ. हेलो. हाँ बोलिए मैम. अच्छा, मैं ना सर मैं योगा करती हूँ. तो जैसा ये आप कह रहे हो ना कुंभक ब्रेथ होल्डिंग. हेलो. बोलिए मैम, बोलिए. Somebody else is also trying to speak, so we have to. तो जैसा योगा में हम. Please go ahead मैम, बोलिए. ये बैठा जो कभी तो आया है. हाँ ये बात है यार, मेगा मना कर रही है. हेलो. संतोष गर्ग जी प्लीज बोलिए. हाँ. हेलो सर. हाँ बोलिए मैम. अच्छा सर, मैं योगा करती हूँ. मेरा 3 साल से मैं डायबिटिक हूँ. तो योगा में जैसा त्रिबंध लगाते हैं, अग्निसार करते हैं, ये भी तो कुंभक है, मतलब ब्रेथ होल्ड है.